Krishna. Ah. ज्ञानन्तमन्दस्य ज्ञानं चराचरात्मना तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदापीशं कदापीशं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापरमं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं सावधातं सर्वगुरुनाथं कृतं तं सजीवं साधुवेतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णमाधव सर्वगणललिता श्रीविशाखापितंश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपेशा कान्ता राधा कान्ता नमस्ते कप्तचञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी भवानी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्री विशेष शून्यवादी आश्रते। Shall we go with the motivation video or shall we go with first shloka? Whatever. No, for me it's okay. Anything. Wait. Mataji, just now I have posted on a Facebook also. Very nice this thing video on perfect person. Okay. Today my whole group, like more than 100 people are very regular in her this thing, and out of them like 50 has traveled all over the India and world for a Wow. prize distribution there in Delhi. Oh, wow, very nice, yeah. So I think that Meenakshi also went to that Radharam Parthasarathi temple. Is it in Delhi or somewhere? Radha, yes. Meenakshi, Meenakshi. Meenakshi, that Rochin class, na? That class. Okay. Radha Sati. Partha Sarthi. It's not Radha Sati. Partha Sarthi. That is what I'm telling. Not Radha. It's Partha Sati. Yes, temple. Partha Sati is the first temple. Yes. It is so good. She's sharing it in WhatsApp status. Made such a beautiful place. Yeah. Okay. Sorry. So let me. Yeah, no. Yeah. I think she has gone to spiritual tour. Oh, Meenakshi, but I'm not able to recall her. Who was Meenakshi? The one, I think so. She's the one who connects for children and their teachers. In Maldives? No. This the group which Rochan was doing. Na, you can your sister connected for Rochan, that class. Acha, Meenakshi. Oh, yes. That's what I said. In our group. Yes. She is in our group. I'm not very much active there because the Dr. Gunjan who who's a gynecologist in Surat, she sponsored the Zoom class and she wake up early and she coordinate and she donate a lot of things. Just whatever the people have the resources. Meenakshi conduct the children class and she coordinates, she make the whole syllabus and material. And there are other people, the one person is from the I think she organized and she takes to the next level for the children. Yeah, she is very much her. Actually, it gives a lot of difference when
your whole family is involved to the Krishna consciousness. And your that world is whole totally different. that is true. That is Because true. it is also said that ki, like in family, one person is there, the other may come to Krishna consciousness, may not. If we will start getting stress about it, that is also not good. So we should do our part, our duty. If they get, definitely they get benefit out of it, but we should not think that the way we are doing, they should, equally participate. Or if it happens, that's very good. But we should do our role or our karma, rest leave on the God, because it is also seen people start taking stress on it. So that is not required. कि वो कहते कर्म कर फल की चिंता, तुम्हारे जितना निमित्त है, तुम्हारे जितना है, you should just follow the process. So yeah, this is very nice video. We should watch. We all, including myself. Okay. One who does not think himself a proprietor and is free from false ego, जो अहंकार से मुक्त है, जिसमें false ego नहीं है, जो ये नहीं सोचता कि मैं ही मालिक हूँ और इसमें वो अहंकार करे. Can you put little volume high if it is there? ये हमसे कभी भी छिन सकती है, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना. ये हमारी है, ये कभी भी हमारी नहीं थी. जो चीज हमारे साथ परमानेंट नहीं रह सकती, वो हमारी कैसे हो सकती? हम परमानेंट है ही नहीं इसमें, तो ये हमारी कैसे है? ये तो हमसे छूट जाएगी. हम प्रयास भी कर लें कि हमें इसको छोड़ना नहीं है, फिर भी हमें छोड़कर जाना है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये चीज मेरी है? तो जो ऐसी प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जो ऐसी अहंकार से जीते हैं, वो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है. फिर भगवान कहते हैं एंड हु इज इक्वल इन व्हाट, और जो सम रहता है, सम दुख और सुख, जो दुख और सुख में सम रहता है, जिसे दुख आए, कष्ट आए, तो वो सम रहता है, वो दुखी नहीं होता. सुख आ जाए तो वो ज्यादा विचलित नहीं होता, सुख में खो नहीं जाता. वो ये नहीं सोचता वो आज सुख आ गया और ये सुख तो बस मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया, मेरे पास ये है, मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे पास जो मैं चाहता था वो मिल गया, आई एम नाउ वेरी हैप्पी. पर ये भूल जाते हैं कि कभी भी छूट सकता है. ये चीजें कभी भी छिन सकती हैं, ये मटेरियल चीजें हैं, और ये कभी भी हमारे हाथ से फिसल सकती है. यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन हमसे कभी भी फिसल सकता है. कमल दल जल जीवन टलमल. तो कमल के फूल पर जैसे पानी की बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी कब हमें धोखा दे जाए हम नहीं जानते. ये कब हमारा समाप्त हो जाए, जीवन कभी फिसल जाए हाथ से. इट कैन हैपन एनी टाइम. तो इसीलिए कहा है कि हमें सुख और दुख में सम रहना है. ऐसा व्यक्ति परफेक्ट कैरेक्टर वाला है. ऐसे व्यक्ति का जीवन परफेक्ट है, क्योंकि वो सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट करता है, भगवान की इच्छा मानकर कि ये भगवान की इच्छा है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो भी मिल रहा है वो भगवान की इच्छा से ही मिल रहा है. तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मानना, ये ही परफेक्ट कैरेक्टर की फॉर्मेशन की नींव. दिस क्वालिटी वी हैव टू इम्बाइब, बिल्डिंग ये सारे गुणों को लेकर बनता है. तो ये गुण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां. तो भगवान ने कह दिया अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्रे करुणा एव च. सो क्या होना चाहिए? द्वेष नहीं होना चाहिए. सबसे पहला दे दिया कि द्वेष नहीं करो. हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं. तो हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए. हमें दूसरों के सुख में सुखी होना है. वैष्णव वो होता है, हमें वैष्णव बनना है. वैष्णव वो जो भगवान का प्रिय है, जो कृष्ण का प्रिय है, जो भगवान को बहुत डियर है. सो ही इज अ वैष्णव. सो वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो क्या है? पर दुखांत दुखी. दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी. वो दूसरे से द्वेष नहीं करता, उसके सुख में दुखी नहीं होता, वो उसके सुख में सुखी होता है. वो जब दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है, दूसरा व्यक्ति बहुत ही खुश है, तो उसके खुशी बांटता है. उसके अगर वो दुखी है तो उसका दुख बांटता है, तो उसके दुख में दुखी हो जाता है, उसके सुख में सुखी रहता है. ये है वैष्णव. तो हमें ऐसा बनना है. कोई व्यक्ति खुश हो तो हमें उसको और उसकी खुशी को बढ़ाना चाहिए और उसको आनंद देना चाहिए. अगर वो दुखी है तो उसके दुख को बांट लेना. हरे कृष्णा राखी. कम हो जाए. तो ये होता है वैष्णव, जो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है और दूसरों के सुख को बढ़ाने का प्रयास करता है. So it sounds so simple, Vidya, but Yes, but that is the thing we have to apply in our life. But we have to apply not only once, every day, every moment. Hare Krishna Rakhi, good to see you. Every day, every moment we have to apply, because we get bewildered in like maybe 10 things we are okay, and 11 thing we
we raise the expectation, hope it should be like this. These lines sounds very simple, but it is for the whole life to work on. It's our job. Though Mataji said it, it's perfection. We can never be perfect, but if we make a target to be like that, if we start working on it, at least we are in the process. We have realization that we have to at least we have to make change first. Yeah. And when we think of a change, if we change ourselves, especially a lady, a house lady, get change ourselves कि हम बहुत demand ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, and if we just do our role and without any expectation is a big statement. When we imbibe this ourselves and we practice on it, it reflects from our personality. और वो जब पर्सनालिटी से निकलता है तो वो अपना एनर्जी और ऑरा इधर उधर करता ही करता है. You can I don't need to, you can that without, yes that one will teach for our children's also without our knowledge. Yes, you can relate with your whatever your thought process and targets or your concern, where you get bewildered. It should be like this. It may be anything with your children, with your things, your future planning, or your friends, or with your things about life कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो होना ही है. That is, nobody is saying कि हमें गोल नहीं बनाना या हमें कुछ करना नहीं चाहिए, materialistic life भूल जाना है. But calm mind से we have to do it. Anxiousness होके नहीं, relax होके. I guess that is the purpose. So this is so beautiful. Like some of the videos, some of the lectures I had listened, Mataji said, explain the story so many times, and every time we feel the new realization. Every time. Like I have shared this story with you, Dhruv Maharaj ki. Yeah, I think so, but I don't know. Let's say Dhruv Maharaj जो थे, उनकी दो mothers थी, सुनीति और सुकृति. सुनीति और सुकृति थी, तो उसमें से जो बड़ी थी वो सुनीति थी या सुकृति थी, आई विल नॉट करेक्टली कोट द नेम. तो जो एक थी उसका कैरेक्टर होता है कि वो अच्छे गुणों वाली थी, तो दूसरी थी वो नेगेटिव गुणों वाली थी. तो जो बड़ी मदर का बेटा था, तो वो मतलब अपने फादर और वो उसका जो राजा था, वो अपनी छोटी वाली वाइफ पे ज्यादा वो रहता था, इन्फ्लुएंस रहता था. तो वो छोटा बच्चा था, ध्रुव महाराज गए और अपने फादर की मतलब गोदी में बैठ के खेलना चाहते थे. तो उसकी छोटी मदर ने बोला हट जाओ यहाँ से, यू कैन नॉट प्ले, जस्ट गो. तो उसको इंसल्ट करके भगा दिया. तो अपनी माँ के पास गया, बोले मेरे को अपने फादर के साथ खेलना है, उनकी गोदी में बैठना है, एंड शी इज नॉट अलाउइंग मी, व्हाट टू डू, व्हाट शैल आई डू. तो वो कहती है कि भाई देखो, तुम्हें खेलना है ना, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो एक के पास ही है, वो है लॉर्ड कृष्णा. जस्ट प्रे टू गॉड. उस समय यज्ञ होते थे, तपस्याएं होती थी, यू डू दैट. तो ही स्टार्टेड डूइंग तपस्या, ऑस्टेरिटी ही स्टार्ट डूइंग. तो देवलोकों में बड़ा ये हुआ कि 5 साल का बालक इतनी तपस्या कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए. तो गॉड इम्प्रेस. मतलब उस समय तो पता नहीं कितनी लंबी जंगलों में जाना, तपस्या करना, पता नहीं किस लेवल का होता था, एंड वो 5 साल का बालक कर रहा था. तो भगवान प्रसन्न हो गए. तो जब उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उसने कहा मैं धन्य हूं. और उसकी इच्छा थी कि उसकी इच्छा ये थी, जब वो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे मेरे फादर से भी बड़ा राज्य मिले, मुझे मेरे फादर से भी ज्यादा पावर मिले, मेरे को मेरे फादर से भी ज्यादा अथॉरिटी मिले, मैं इतना पावरफुल हो जाऊं. दैट वाज हिज मोटिव, टू गेट द मटेरियलिस्टिक डिजायर, विच वी ऑल डू. चाहे हम अपने कुछ भी हम सभी करते हैं. तो एज ए नॉर्मल पर्सन ही वाज लुकिंग फॉर द मटेरियलिस्टिक डिजायर. सो भगवान उसकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूं. जैसे ही भगवान अपने दर्शन देते हैं, उसको प्रसन्न होकर ब्लेस करते हैं. वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपकी शरण में आना. आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे नहीं राज्य चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पावर. जिसलिए मैंने ये तपस्या की थी, मुझे वो सब नहीं चाहिए. मुझे तो आपकी शरण में आना है, आपसे कनेक्ट होना. दैट इज माई नाउ डिजायर, टुडेज डिजायर. जब भगवान मिल जाते हैं,
तो भगवान कहते हैं देखो तुमने इतनी तपस्या की, जो तुमने मांगा है वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, पर आसक्ति ले ली। आसक्ति मीन्स कि आपके पास वो सब मिल गया भगवान से कनेक्ट होने में जो आपको चाहिए था, पर आप उसको पाके पागल हो जाते, यू नो, एकदम खो जाते कि इसके अलावा कुछ और सुख नहीं है। वो आसक्ति ले लेते हैं, उन्होंने ध्यान अपने अंदर ले लिया। तो उसने कहा नहीं तुम्हें इतना बड़ा राज्य मिलेगा, सारी पावर्स होंगी, पर उसका जो मन, उसकी प्रायोरिटी थी वो स्पिरिचुअलिटी और भगवान में रही। तो उसने फिर इट इज सेड दैट कि उसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, और ही वॉज अ वेरी पावरफुल। वो सारी काम करता था एज ए ड्यूटी, पर उसका कनेक्शन और प्यार भगवान से था। तो ही वॉज अ आइडियल किंग। उसको वो आइडियल किंग था कि वो भगवान से कनेक्टेड था, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, भगवान ने वो दे दिया। पर अगर वही उसका भगवान से कही ओके मुझे मेरी पावर मिल गई, नाउ आई डोंट नो हु इज गॉड एंड ऑल, और जब हमें चाहिए, और वो अगर वो उसको एंजॉय करता तो वो कुछ साल तो एंजॉय करता, बट देयर वाज अ टाइम जहां उसका फॉल डाउन हो जाता, क्योंकि सब चीजें टेम्परेरी है ना। कभी ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम जो इच्छा करते हैं जब हमें मिल जाती है तो हम उसमें इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कभी भी जा सकती है, वो रह भी सकती है, जा भी सकती है। तो हमें इतना, कहते हैं ना, इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए। जैसे जो चीज है उसको अच्छे से एंजॉय करो, बट डू नॉट अटैच टू इट। ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करना, अपनी ड्यूटीज करनी है, प्यार से करनी है, हर्षोल्लास से, मतलब बहुत एक्साइटमेंट से, हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट सब, बट वी शुड नॉट अटैच टू दैट थिंग, अटैच टू गॉड, डिटैच टू आवर कर्मा, डू इट एज अ ड्यूटी। सो भगवान ने ये करा कि उसकी आसक्ति ले ली। So I guess you all can connect with the story, and ये कितनी बार माता जी ने सुनाई है, कितनी बार सुनाई है। This is always a reminder to us कि हम कितना ही सुन ले, कभी ना कभी हमें नहीं, ये चीज तो ऐसी ही होनी है, नहीं ये इसके लिए नहीं। Then I remind myself कि मैं वो what we are doing, कि ये इच्छा रखना, कर्म करना मेरा काम है, पर वो ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिस नॉट आवर जॉब। एंड सेम विद दुख। आज दुख आया है, भगवान जब हम भक्ति में जाते हैं तो कई भक्तों के साथ ऐसे भी करते हैं, वो दुख भी देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, कि कई लोग चैलेंज में भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं कि भाई मैं तो इतनी माला कर रही हूँ, मैं तो सुबह उठ रही हूँ, या मैंने इतना सब कुछ किया, फिर वाई आई एम फेसिंग सो मेनी चैलेंज, यू नो। तो भगवान तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं मेरे जो करना है वो करूंगी, या ऐसे करते हैं। ऐसे कई लोगों के साथ होता है। पर जो सुख में दुख में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, उन पे विश्वास रखता है, तो भगवान उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो कहा है गीता में, साफ लिखा है, मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता, जो उसके पास है उसकी रक्षा में करता हूँ, जो नहीं है मैं वो लेके आता हूँ। व्हेन ही सरेंडर हिमसेल्फ टू मी, fully surrender, we are not fully surrender. When we fully surrender to him, then he take care of our belongings and he brings what we need it. So let's go to the shloka. कौन सा श्लोक था? 2.36. Can you see my screen? Vidya, you are on a mute from long time. 1 minute, I'll just have my water and I'll come back Yeah, to you. tell. Please. Yes. Yeah. How are you, Rakhi? I'm fine. How are you? Good. बस अभी मैं देखा, मैंने कहा अभी तुम्हारी चल रही है। Yeah, actually from there I was conducting on a US time, and Vidya and Anuja was I can understand. I know with everyone it's not possible. I hope you might be watching recordings or something. Yeah, कभी देखती थी। Actually मैं भी थोड़ा busy थी। Right, that's perfectly okay. That's perfectly okay. So is this 2.36 already finished? 2.37 also we finished, I think. So if once I see this, I can tell it. Yeah, this is Hatova Prayasada. Wait. I guess 2.37 we have to do it. Yeah, wait, I'll just... You just, still more, you just... I guess we have not done this. We have not done this. That Arjun one only we have finished it, right? Yeah. Will you read, Vidya? Yeah.
Okay, you just ask asking Rakhi, me would you change. like to read this shloka? I don't have anything. नहीं ये Okay, can okay. you okay ठीक है Vidya you read it. Yeah. Hato va प्रसयसि स्वर्गं जित्वा वा बकोष्यासि महिं तस्मद् उतस्त कौन्तेय युद्धाय कृत निष्क्रियाय. Okay, I can see now. Translation: O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attend the heavenly planets, or you will be conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with the determination and fight. Purport: even though there was no certainty of victory of Arjuna's side, he still had a fight. For even being killed there, he should be elevated into a heavenly planet. I hope its line is clear. Whether you fight or not, if you will fight, if you kill also, so you will go to the heavenly planet. Like, at least you do your duty. Why are you getting afraid? So God has already declared, if you kill or not, they are going to be die. Their destiny are already been decided. So why we are thinking we're materialistic, we are killing? You are saying if you have to give somebody, we have to work on a soul level. Because our journey is here and मनुष्य जीवन है जो हमारा भगवान से connected, because in 84 lakh species humans are the only blessed species who can worship God and connect to God, and we can improve our karmas and elevate ourselves even in the human form. There are 4 lakh species, so we have to use of it to at least elevate ourselves. If we miss something in this life in bhakti or to connect to God, so if we can pray at least if you give us a next human life, then I can continue. Because going back to Godhead is not for everyone. Yes, we can have a target, but we should do devotion in such a way, we should not really worry whether I am going to have a human life or I'm going to back hot. प्रभु जो जिस जिस जो मेरे कर्म है तो जिस हाल में रखेगा मैं उसको स्वीकार करती हूँ. There were many devotees happen in the past कि अगर उनकी गलतियां हुई, उनको realization हुआ जब भगवान ने दर्शन दिए, so they have accepted that gracefully. They have not fight and objected that why you did this with me. Then we are liberated when we accept the situation how it comes. I deserve it, I accept it, and I'll move it. The same attitude we should have it. कि हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है. मतलब आज वो जो हमारी जूम क्लास है उसमें कितने बाहर से लोग आए हैं, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, profound jobs people, everybody is fly to attend that event, and they are for 2-3 days and they will go back. Some people have flight for with the family. So much of determination. So next. What I said it, I guess that line is coming. Will you read it? That Radhika ma'am what told na, it is connected with this, I think. Yes, so. yes. See, I didn't know that I'm going to pick that video, but I thought Yeah, yeah, just read it. yeah. Sukh dukh same kratva tabatvava jayaya tuto yuddhova yujasva naivam papam avapasyasi. Translation: do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Purport: Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. The concentration of happiness or distress, profit or loss. Is this one we did or not? I think so. We have done it. I don't know. Okay, let us. We haven't done because it's the same thing. God is it Same is thing, coming because repeated. repeatedly. Okay, okay.
the happiness बार or भगवान distress. इसी बात पे एम्फसाइज करे, बार बार वही बात बोली जा रही है in a That, different that, language. that also, yes, that previous also Karna and the other guru name also came corrected with the same बार thing. बार. Yes, yes, consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness, that everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is a no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in In passion. passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is the longer obliged to anyone, nor is he debitor to anyone as one is in the ordinary course of activities. It is said, Devarasi Bata Butpata Naranam Pitranam Na Kinkaro Nayam Rinika Rajan Sarvatmana Yaha Saranyam Gato Mukandam Pratyatya Kurtam. Anyone who has completely surrendered into Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer debitor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, sagas, nor the people in a general, nor a kinsman, nor humanity, nor the forefathers. Bhagavad Gita. That is 11. That is the indirect hint given by the Krishna to Arjuna in his verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. Yes. So इसमें ये बोला है कि जैसे भगवान उसको तो अर्जुन को बोल रहे ना, you fight. So whether it's a sense gratification for the goodness, mode of a goodness, or a bad. Like if we crave for the, this is our sense gratification. If we want to enjoy and if we are worried, so उसके reaction के लिए भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. और and if we are thinking that if I'm going to do something that going to give me a pain, so that is our own sense gratification. But what is your duty? You should follow without considering the reaction of that activity, whether it is a goodness or a pain. You have to do your duty. We should not consider and think about the reaction of that activity. बट हम जिस गुण में, जिस परिस्थिति में खड़े हैं, वो गुण परिस्थिति या सिचुएशन हमारी कैसे आती है, व्हेन वी अंडरस्टैंड द गीता नाइसली, देन वी कैन रिलेट कि इट इज, कई बार सबने कहा होगा ना, आपका जो दिल कहता है करो, जो मन की बात है, भगवान मन में है, मन माय वाइब्स, माय आई वाज हैविंग दिस फीलिंग, सो दैट इज आवर ओन डिस्क्रेशन. कहते हैं ना, जब आपको अंदर से कुछ लगता है ना कि मुझे ये करना है, और हम मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमारी अंदर की आवाज कुछ और होती है, हम कर कुछ और रहे होते हैं. तो जो अंदर होता है ना, वो आपके साक्षी भगवान है. तो जब हम अपनी ओन डिस्क्रेशन से काम करते हैं, दैट इज अ रियल थिंग. ओन डिस्क्रेशन मीन्स एक वाइब्स होती है ना, समटाइम हमारे मन गवाही कुछ और दे रहा है, पर हमारा इन्फ्लुएंस कुछ और हो रहा है. सो दैट इज हमारी डिस्क्रेशन पावर इतनी, जब भगवान से इतनी बढ़ जाती है कि वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाती है कि मेरा क्या काम है. तो यहाँ नीचे क्या लिखा है कि व्हेन अ पर्सन फुल्ली कंप्लीटली सरेंडर टू द कृष्णा, तो उसे किसी भी डेमीगॉड्स की ड्यूटी, सेजेस और इंसेस्टर, किसी को प्लीज करने, किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है. डज नॉट नीड टू प्लीज एंड डू द रिचुअल फॉर एनीवन, बट we are not fully surrendered. If we are doing all this, and that's okay, it is surrendered if we are fully surrendered to Krishna. वो विश्वास है, क्योंकि हमारा कर्म उनकी बातों पे चल रहा है, तो फिर बाकी सब तो उन्होंने ही बनाया है. We don't need to reach out to demigods and do the rituals of ancestors, sages, ये वो. तो आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं है. तो it should be our target again. तो कहा गया है कि उन जो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर होते हैं, उनको कोई रिचुअल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है. पर आवी तो वो हमारी अपनी डिस्क्रेशन है, हम हैं उतने.
Yeah. नहीं अभी so let's what is the time before it ends? Shall we do the nursing aarti or let's discuss, let's talk about your own realization about Gita lessons and all. Raki, you want to share something? आपका कोई experience? No, not now. कोई experience, कोई story, whatever you're listening, कि कुछ experience हुआ हो कि हाँ कैसे भगवान मदद करते when you connected कि yes, this is the way we felt it. अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा. Okay, Vidya, you want to share? Because that also build our confidence, and this is the time we recall and we acknowledge the Actually, to be frankly speaking, the class itself, something is connected. Very simply, I have to yeah, tell it. but we relate with our own day-to-day life, so this help us to deal with every task. Like sometime you might have seen, I have picked up so many examples to with my day-to-day things. This happened, I was thinking this, and this has happened. You know, when I was coming to my Shreya used to tell me that why saying that Krishna is the only God, the people who worship the Jesus and the Allah, for them it's a God, why are you saying the God? I said, that's okay. So whichever form they are doing, that's okay. I'm not saying no. वो सब levels है, हमें elevate होना है. So, you hate Muslims and all? I said, no, I don't hate anybody. Everything scripture says is everything. So when I was coming, I was sitting in the lodge. So there was a lady came to me and she was Pakistani. And listen, Vidya, this is a beautiful experience I had. And was having 8 hours of transit time. So I was listening to lectures and spiritual talks and all. I was alone. I was tired and struggling with my meal and all, and so I was just listening to the lectures quietly and sitting in the one chair. Then the lady somebody sitting here, there was a chair next to me खाली थी, तो आई कहती है मैं बैठ सकती हूँ, बैठ गई. तो बोली कि मेरी इतने बजे आपकी फ्लाइट कब की है? She start talking to me. तो how are you? मैंने कहा I have a flight to Maldives. Then what I do, something has happened. Then she said, I said I to just spending my time listening to spiritual lectures. She said, oh my God. And she said, oh my God, I'm a very spiritual person. And then we start talking. Vidya, you won't believe, she was receptive. She was from Pakistan, belonged to, and she's staying in Canada. She was going to Lahore. So our dialogue conversation for more than 1 to 1 hour was, Allah said this, Krishna says this, Allah said this, and she herself made a statement. And she said, I am very emotional, and सब एक ही जैसी बातें होती हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है. And she said it कि yes, that the Islam came 1500 years before, and Hinduism scriptures are from many thousand years. I didn't say. She said it herself. She has that realization, and she was keen to know that why you're not eating onion garlic. And she was so much of acceptance to me, whatever. The person who's connected spiritually, whether it is Allah or Jesus, so he will not discriminate that I am powerful, you are not powerful. So she was aware about the fact and figures, because I told her that yes, messenger is Muhammad and son of a God is Jesus. So she said, yes, it's written in Quran. She herself said it. So this was our dialogue of discussion. I put off my videos and I start enjoying talking with her. I took her number. She's exchanging some of beautiful songs and all. So this is maybe I'm connected to the materialistic world. That is my duty. But my craving is that. तो भगवान आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पास लोग भेज देते. So that point also clear, because I am back of the mind, I have this thing कि मुझे इन चीजों का भी experience लेना है कि how it is one, how we are not supposed to discriminate, but we have to be aware of the fact. And she has said that this is so beautiful, Vidya. और मैं इतनी इनग्रॉस हो गई, मैं इनग्रॉस इसमें हुई कि भगवान की स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. शी इज गोइंग कि उसमें ऐसे लिखा है, ऐसे करते हैं मेरे साथ, ऐसे वी वर एंजॉयिंग सो मच. So you had a great time with the realization, na? Yes, and it is. मतलब हमने जब हम
बातें सुनते हैं और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो शी वाज सेइंग बार बार कि मुझे किस चीज, उसका एक बड़ा एम्फेसाइज था कि मुझे किस चीज की चिंता करनी है, मुझे अगर यहाँ खाना खाना है तो मेरा दाना पानी लिखा हुआ है, तो मैं चिंता क्यों करूं? वो बैठा है ना, वो मैं चिंता क्यों करूं? जो मेरे किस्मत में लिखा है वो होना ही है, तो मुझे चिंता क्यों करनी है? मुझे अपने हाथ पैर क्यों मारने? अगेन निताई माता जी, तो वो ये अभी मैं उनका सुनती हूँ, उनका ये स्टेटमेंट था कि चिंता हमें उस चीज की करनी चाहिए, यस, जैसे किसी का एग्जाम है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसके हाथ में छोड़ो, अपना काम करो। It was very nice dialogue exchange, and that was very good. So let's do Nasing Aarti. Yeah. Namaste Narasimhaya Prahlad Lad Daini Hiranyakashipu Rakshava Shilatanda Nakalai Ito Nasinga Pato Nasinga Yato Yato Yami Tato Nasinga Mahe Nasinga Rehede Nasinga नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल वरेण काम अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 श्री भगवान की जय। Hare Krishna. Thank you so much everyone for joining the class. Rakhi, good to see you. Thank you. हरे कृष्णा। अभी अच्छा वेडनेसडे थर्सडे रखना है या ऐसे लेट इट बी वंस अ वीक? No. For my sake, it's okay. Nothing to worry. Rakhi, are you okay for the Wednesday or Thursday? Wednesday, what time? The 4 o'clock or so. You suggest any time? Actually मेरा वो योगा होता है ना, तो So we can do it in the afternoon if you want to join. Like एक हम दोपहर में कर लेते हैं, शाम को सैटरडे का हो जाता है, यही टाइम सैटरडे वाला है ना, 3:30 ऐसा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। Let's try. Yeah. Okay, thank you. See you in the next class. Thank you. Hare Krishna. Okay. Have a nice weekend to all of you. Hare Krishna. Thank you and thank you.